Very nice. Yes, very good. In the last lecture, we discussed about the numbers 10 to 20. Now we today start the chapter number 8. 5 and 8 हम दोनों साथ करते, right? Because of दोनों numbers के chapter है. Numbers from 21 to 50, right? Yes. Page number 104. Fill in the blanks. क्या है? Fill in the blanks. आपको एक मैथ स्टिक्स का बंडल दिया हुआ है एंड फिर कितनी दी हुई है? काउंट करो. 1 2 3 4 5 6 7 8. It means 10 plus 8. How many? Yes, 1 8 18. Now the next one. One bunch of 10 sticks. Then 1 2 3 4 5. 5 more. 10 plus 5 15. Then write down in the circle 1 5 15. Then after 10 matchsticks, one bundle, right? And then after 6 more, मतलब 1 6 16. Then after write the numbers. 10 मतलब which place? 10th place. 10 मतलब which place? 10th place. And your second number is the 1st place. Then 10 1 10 and 4 ones मतलब 1 4 14. Then after 1 10 मतलब 1 2 ones मतलब which number is count? 12. Then write down in the square 1 10 and 2 ones. Then after 10 bundles and 9 ones. One bundle में कितने स्टिक्स है? 9. Sorry, 10. In the second one 9 ones मतलब 10 1 10 and 9 ones equal to 1 9 19. Now draw the bundles and ones. आपको यहाँ पे 10 10 के bundles draw करने हैं और ones की प्लेस पर जितने numbers दिए हैं उतने आपको draw कर रहे हैं. Now see here 1 5 15 मतलब 1 10 मतलब 10 matchsticks का one bundle and 5 more मतलब ones की प्लेस पर 5 matchsticks. Then second one 2 0 20 दिया है. Then 2 मतलब 10 10 के 2 bundles और 0 ones की प्लेस पर है मतलब 0 means nothing. तो एक भी bundle ड्रॉ करेंगे, एक भी matchsticks ड्रॉ करेंगे नहीं. Then after 2 2 22 2 tens मतलब tens की प्लेस पर 2 bundles 10 10 के 2 bundles मतलब 20 और ones की प्लेस पर 2 matchsticks मतलब 2 2 22. Now the next one write the number. Tens की प्लेस पर 2 bundles मतलब 2 tens and 5 ones. It means 25. Then second one 2 tens मतलब 2 bundles and 3 ones मतलब 23. Then write down in the circle 2 3 23. Then after 2 tens मतलब 2 bundles 10 10 के 2 bundles and 6 more matchsticks मतलब 2 6 26. Yes. Then after 4 bundles but not a single matchsticks in the ones place. ones की प्लेस पर एक भी matchsticks है नहीं. It means the 0. 4 bundles मतलब in each bundle has 10 matchsticks. तो 10 plus 10 plus 10 plus 10 4 times मतलब 40. Yes, good. Then after 3 bundles and 9 more matchsticks. 3 bundle means 30. એટલે 3 tens, right? 3 tens and 9 ones. 3 tens and 9 ones मतलब 3 9 39. Very nice. Then after 3 bundles and 3 matchsticks. It means 3 tens and 3 ones. 3 tens and 3 ones मतलब 3 3 33. Very good. Then after 4 matchsticks, 4 bundles of matchsticks. In each bundle has 10 matchsticks मतलब 40 मतलब 4 tens. Then after 2 more matchsticks मतलब 4 to 42. Then after 4 matchsticks
6 bundle of matchsticks, then after 6 more. मतलब 4 6 46, yes, 4 tens and 6 ones, मतलब 46. Then after 3 bundles of matchsticks and 7 more, मतलब 3 tens and 7 ones, मतलब 3 7 37. Good. Then after 4 tens मतलब 4 bundle of matchsticks. In each bundle has 10, मतलब 4 tens 40 and 7 more. Sorry, 6 more, मतलब 4 6 46. Yes, turn the page. Yes, numbers from 21 to 50. Yes, 2 tens 1 1, मतलब 21. 2 tens and 2 ones, मतलब 22. Then 2 tens and 3 ones, तो 3 की प्लेस पर कितने मैट्रिक्स आएंगे? 3 ones 3. यस, ड्रॉ करो लाइक दिस. आपको ऐसे ड्रॉ करना है, जहां जहां पे बोलूं वहां पे काउंट करके. डन. देन आफ्टर नेक्स्ट 2 tens and 4 ones, मतलब 24. राइट डाउन इन द सर्कल 24. देन आफ्टर 2 tens and 5 ones, मतलब 25. देन आफ्टर 2 tens and 6 ones, obviously 26, but 6 ones पे मैचस्टिक्स ड्रॉ करनी है. हाउ मेनी? 6. yes. then after 2 tens and 7 ones, 7 ones मतलब 7 मैचस्टिक्स ड्रॉ करो. yes. and 2 tens and 7 ones मतलब 2 7 27. right. then after 2 tens and 8 ones, then how many matchsticks you have to draw? yes, 8. do it. and 2 tens and 8 ones, मतलब how many? 28. right. then after 2 tens and 9 ones, 29. then after 2 tens and 1 ten, 2 tens and 1 ten भी बोल सकते हैं, and 3 tens and 0 ones भी बोल सकते हैं. right. yes, 3 0 30. then उसके बाजू में 3 tens and 1 1. yes. then 3 1 sorry 31. yes. then 3 tens and 2 ones, but 3 tens की जगह पे एक भी बंडल ड्रॉ किया हुआ नहीं है, तो आपको इस तरह से ड्रॉ करना है. डू इट फॉर दिस. yes. then 3 tens and 2 ones, मतलब 3 2 32. yes. write down in the circle 3 2 32. then after 3 tens and 3 ones, but ones की प्लेस पर एक भी मैचस्टिक्स है नहीं, then how many matchsticks you have to draw? yes, 3. do it. then 3 tens and 3 ones, मतलब 3 3 33. yes. then after 3 tens and 4 ones, yes, 3 4 34. right. then after 3 tens 5 ones, but एक भी बंडल है नहीं, then how many bundle you have to draw? yes, 3 bundles. right. then 3 tens and 5 ones, मतलब 3 5 35. good. then after 3 tens but 6 ones, 6 ones की प्लेस पर एक भी मैचस्टिक्स है नहीं, then yes, 3 tens and 6 ones 36. right. 3 tens and 7 ones, yes, 3 7 37. then after 3 tens and 8 ones, but 8 ones की प्लेस पर how many matchsticks you have to draw? yes, 8. and 3 tens and 8 ones, मतलब yes, 38. then after 3 tens and 9 ones, but 9 की प्लेस पर how many matchsticks? yes, 9. and 3 tens and 9 ones, मतलब 39. right. then after 3 tens and 1 10, yes, 40. otherwise क्या बोलेंगे? 4 tens and 0 ones.
Then after next page, numbers from 41 to 50. Yes, 4 tens and 1 ones. Yes, 41. 4 tens and 2 ones, but 2 की place पर एक भी matchsticks है नहीं. Then you have to draw 2 matchsticks. Then 4 tens and 2 ones मतलब 4 to 42, right? Then after 4 tens and 3 ones. 4 tens and 3 ones मतलब 4 3 43. Yes. Then after 4 tens and 4 ones, but 4 tens की place पर एक भी matchsticks draw की हुई नहीं है. Then you have to draw like this. 1 2 3 4. Then yes, 4 tens and 4 ones. How many? 44. Yes. Then write down in the circle 4 4 44. Then after 4 tens and 5 ones, but 5 की place पर एक भी numbers है, sorry एक भी matchsticks है नहीं. Then 4 5 45, right? Then after 4 tens and 6 ones. Yes, in the ones place you have to draw 6 matchsticks. मतलब 4 6 46, right? Then after 4 tens and 7 ones. Yes, 47. Then after 4 tens and 8 ones, but you don't have any matchstick in the ones place. Then draw the 8 matchsticks in the ones place first. Then 4 tens and 8 ones, it means the 4 8 48, right? Then after 4 tens and 9 ones, but tens की place पर एक भी matchsticks का bundles है नहीं. Then you have to draw how many bundles? Yes, 4 bundles, right? Then 4 tens and 9 ones मतलब yes, 4 9 49. Then 4 10 and 1 10. 5 0 50. और 5 0 50 को और क्या बोलेंगे? 5 tens and 0 ones. Now in the next page you have to write missing numbers. आपको missing numbers दिए हुए, right? Now start from 1. 1 after which number is come? 2. 2 after 3. 3 after 4. 4 after 5. 5 after 6. 6 after 7. 7 after 8. 8 after 9. 9 after 10. 10 after 11. 11 after 1 to 12. 1 to 12 after 1 3 13. Then after 1 4 14. Then after 1 5 15. Then after 1 6 16. Then after 1 7 17. Then after 1 8 18. Then after 1 9 19. 1 9 19 after 2 0 20. 2 0 20 after 2 1 21. 2 1 21 after 2 2 22. 2 2 22 after 2 3 23. Then after 2 4 24. Then 2 5 25. Then after 2 6 26. Then after 2 7 27. Then after 2 8 28. Then after 2 9 29. 2 9 29 after 3 0 30. 3 0 30 after 3 1 31. 3 1 31 after 3 2 32. 3 2 32 after 3 3 33. Then 3 4 34. Then after 3 5 35. Then 3 6 36. Then 3 7 37. Then 3 8 38. Then after 3 9 39. 3 9 39 after 4 0 40. 4 0 40 after which number is come? 4 1 41. Then 4 2 42.
42, 4 2 42 after, 4 3 43, 4 3 43 after, 4 4 44, then 4 5 45, then 4 6 46, then 4 7 47, then 4 8 48, then 4 9 49, and 5 0 50. Then after I have to give a sum, fill in the blanks. Fill in the blanks में क्या है? 2 tens and 3 1. 2 tens and 3 ones मतलब which number is come? 2 tens and 3 ones मतलब yes 2 3 23. Then after 4 tens and 7 ones. Yes 4 7 47. 3 tens and 0 ones. Yes 3 0 30. Then 1 10 and 6 ones. Yes 1 6 16. Now 32. 32 equal to blank tens and blank ones. तो 32 में tens के प्लेस पर क्या है? Yes 3 and ones की प्लेस पर 2. आंसर क्या होगा? 3 tens and 2 ones. Then after 2 5 25 equal to blank tens and blank ones. So 2 5 25 में which one is tens and which one is ones? Yes 2 tens and 5 ones. Right. Then after 1 to 12. 1 to 12 में yes 1 tens and 2 ones. Good. 3 9 39. 3 9 39 equal to blank tens and blank ones. Yes 3 tens and 9 ones. Right. तो अब आपको ये fill in the blanks आ गई. Yes. तो आपको एक तो एबेकस वाला सीखना है कि जिसमें आपको बिट्स दिए हुए हो, बिट्स को काउंट करके लिखना है जो हमने फर्स्ट लेक्चर में किया था. राइट. देन आपको नंबर्स दिए हो और एबेकस में बिट्स ड्रॉ कर रहे हो. राइट. डन. नाउ हियर इज द चैप्टर कंप्लीट. टिल दैट बाय बाय. टेक केयर. स्टे सेफ. स्टे हेल्दी. टेक केयर. आभार.